Namaskar, hello and welcome viewers. You're watching this special presentation of Sansad TV on the winter session. The winter session of Parliament, which commenced on Wednesday, 7th of December 2022, has been adjourned sine die on Friday, 23rd of December. The session provided 13 sittings spread over a period of 17 days. In this edition, we'll get you all the highlights of the session. Come along. Parliament of India is the supreme legislative body and a living epitome of freedom and sovereignty of the people of India. It occupies a preeminent and pivotal position in India's democratic polity. The demand for popular government and representative institutions, such as Parliament, remains central to our struggle for independence. The stalwarts of our epic fight for freedom and the founding fathers of our republic had conjured up the vision of Parliament as the institutional embodiment of our democracy and sovereign authority of our people. In a year, Parliament meets for the budget, monsoon and winter sessions. The winter session, which was originally scheduled to have 17 sittings from 7th of December 2022 to 29th of December 2022, was curtailed due to completion of essential government business and of the recommendations of business advisory committees of both houses of Parliament. BACs of the houses took cognizance of demand and sentiments of members of Parliament across party lines for Christmas and New Year celebrations. The session commenced with customary appeal of the Prime Minister for ensuring productivity. मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्यवृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे, दिशा को और स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे. Parliaments worldwide perform three core functions: to represent citizens' interests, to pass laws and to monitor the actions of the government. The basic function of Parliament is to make laws. All legislative proposals have to be brought in the form of bills before Parliament. During the winter session, 9 bills were introduced in the Lok Sabha, 7 bills were passed by the Lok Sabha and 9 bills were passed by the Rajya Sabha. Total number of bills passed by both houses of Parliament during the session is 9. Some of the major bills passed by both houses include the Wildlife Protection Amendment Bill seeks to increase the species protected under the law and implement the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. हमने पिछले दिनों में अभी हमारे देश में विशेष रूप से टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि दुनिया का जो 70% जो वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर है वो हमारे देश के अंतर्गत है. अभी हमारा एस्टिमेशन का कार्य चल ही रहा है. उसके साथ ही साथ भारत ने 1950 में जो हमारे यहाँ से चीते विलुप्त हुए थे उनको वापस लाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसको इकोलॉजिकल रॉन्ग जो हमारे देश में हुआ था, इकोलॉजिकल हार्मनी को स्थापित करने के लिए कार्य किया है. The Energy Conservation Amendment Bill 2022 seeks to mandate use of non-fossil fuels, including green hydrogen, green ammonia, biomass, ethanol for energy and feedstock. It seeks to establish carbon markets, bring large-scale residential buildings within the fold of energy conservation regime, and enhance the scope of Energy Conservation Building Code. It also seeks to amend penalty provisions and increase members in the Governing Council of Bureau Energy Efficiency. It also seeks to empower the state electricity regulatory commissions to make regulations for smooth discharge of its functions. भारत ने कहा कि हमारा जो बिजली उत्पादन की जो क्षमता है उसका 40% हम कर देंगे नॉन फॉसिल से बाय 2030. ये बहुत बड़ा एक कमिटमेंट है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी बहुत है. लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कर ही नहीं दिया. हम लोगों ने उसे एक्सीड कर दिया और कर दिया 9 साल पहले. हम लोगों ने कहा था कि ये हम अचीव करेंगे 2030 तक. ये हम लोगों ने अचीव कर लिया 2021 नवंबर तक.
जो हमने प्लेज किया था COP21 in Paris in 2015, that by 2030 we will reduce the emissions intensity of our economy by 33 to 35% by 2030. Now we've already reduced it by more than 30% already, and we are in 22. So again, we are a leader. So that's why in renewable energy, in climate change, in clean energy, India is a leader, undisputed. हमारा कोई बराबरी नहीं कर सकता. The New Delhi Arbitration Centre Amendment Bill 2022 proposes to change the name of centre from New Delhi International Arbitration Centre to India International Arbitration Centre, so that a unique identity of the institute of national importance, as conferred on it by law, is evident and reflects its true objective. ऑलरेडी दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है और एक नई दिल्ली के नाम से चलाएगा, तो उसमें विरोधाभास होगा या कंफ्यूजन होगा. मैं मानता हूं कि इस पहल के बाद हम कई ऐसा चेंजेस आगे देखने वाले हैं, जिससे हमारे उभरता हुआ आर्थिक शक्ति के साथ साथ हम एक मैग्नेट की तरह दुनिया का बिजनेस कम्युनिटी को हम इंडिया में अट्रैक्ट कर सकते हैं. The Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill seeks to amend the Constitution Scheduled Castes Order 1950 and the Constitution Scheduled Tribes Uttar Pradesh Order 1967 to exclude Gond community as scheduled caste in 4 districts of Uttar Pradesh. The Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill seeks to further amend the Constitution Scheduled Tribes Order 1950 to modify the list of scheduled tribes in the state of Tamil Nadu. Meanwhile, the Constitution Scheduled Tribes Order 4th Amendment Bill seeks to further amend the Constitution Scheduled Tribes Order 1950 to modify the list of scheduled tribes in relation to the state of Karnataka. यह हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी एक रीजन है, एक क्षेत्र है. उन क्षेत्र में सीमित जो लोग हैं उनके लिए यह प्रावधान है, क्योंकि वो आदिकाल से उन परंपराओं के साथ रहते हैं जो जनजाति चरित्र को प्रदर्शित करता है. ये ट्रांसगिरी एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, लगभग 4 ब्लॉक में रहने वाले लोग हैं, उनको हमने इसमें सम्मिलित किया है. तो ये प्रस्ताव मैं समझता हूँ कि न्याय देने वाला प्रस्ताव है, वैसे लोगों को सुविधा देने वाला प्रस्ताव है जो वर्षों से उपेक्षित रहे. The Maritime Anti-Piracy Bill 2022 proposes to make special provisions for repression of piracy on high seas and to provide for punishment for the offence of piracy. I thank the committee for examining the bill in detail and making very useful recommendations and observations. To suitably incorporate these recommendations, the Ministry of External Affairs held several rounds of ministerial consultations with concerned ministries and departments. The amendments have been drafted and finalized in consultation with and concurrence of the Ministry of Law and Justice. Sir, I am happy to note that out of the 18 recommendations of the committee, 14 have been incorporated suitably. 3 recommendations, number 1, 3 and 18, were in the nature of observations which have been noted. During the session, first batch of supplementary demands for grants for 2022-23 and demands for excess grants for 2019-20 were discussed and voted in full, and the related appropriation bills were introduced, discussed and passed by the Lok Sabha. Meanwhile, the Rajya Sabha returned these bills after a debate of about 9 hours. Here, there is now very obviously a declining demand for jobs in the rural areas. In the rural areas, the demand for Manrega in the recent past has been coming down. However, 73,000 in the BE and also 16,200 now. It is not coming down. People are not having the opportunity of doing jobs. Manrega is a demand-driven program, sir. Demand-driven. And if demand doesn't come, should I read it as it's going up? In the upper house of Indian Parliament, one short duration discussion under Rule 176 was held on serious effects of global warming and the need for remedial steps to tackle it.
which engaged 17 members for about 3 hours. Meanwhile, 2 short-duration discussions under Rule 193 were held in the Lok Sabha on the problem of drug abuse in the country and steps taken by the government, and discussion on the need to promote sports in India and steps taken by the government resumed and concluded. More than 15 hours were devoted to these 2 discussions, in which 119 members across party lines participated. आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 2014 से पहले इकट्ठा हुआ था नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में, वो मात्र 27 करोड़ था, जो अब हमने 300 करोड़ किया है, और असिस्टेंस को बढ़ाकर भी 52 करोड़ रुपया खिलाड़ियों के लिए कर दिया है पिछले 8 वर्षों में, जो अब तक की अभूतपूर्व है। और 88 करोड़ रुपया हमने टॉप्स के लिए भी इसके माध्यम से दिया है, साई के लिए, और 158 करोड़ रुपया पूर्व चैंपियनों को भी हमने अलग अलग तरीके से मदद करने का काम किया है, और 30 करोड़ रुपया डिस्पर्स किया है टॉप्स के खिलाड़ियों को आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस के रूप में, जो जेब खर्च के रूप में मैंने बात की पिछले कुछ वर्षों में 2015 के बाद। और हम यंग एथलीट्स की अगर बात करें तो इसके लिए भी 125 करोड़ रुपया 2014 के बाद भारत सरकार ने खर्च किया है, जो आज तक का सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया है। पारदर्शिता हमने अपने काम में भी, खेल संघों में भी लाए हैं। खिलाड़ियों की भूमिका खेल संघों में भी बढ़ रही है, और जो हमने टॉप स्कीम शुरू की है, इस टॉप्स के अंदर जो मिशन ओलंपिक सेल है सर, उसमें पूर्व खिलाड़ियों को ही सदस्य रखा गया है। वो ही पूरा उसको देखते हैं और वही उसमें अपने सुझाव देते हैं। इसकी रेगुलर मीटिंग हर दूसरे महीने होती है, और इस पे लगातार वर्चुअल और फिजिकल मीटिंग, 6-7 तारीख को दिल्ली में फिजिकल मीटिंग थी। तो मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ, भारत सरकार अपनी ओर से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही। भारत सरकार ने हर संभव प्रयास किए कि खेलों को आगे बढ़ाएं। External Affairs Minister S. Jaishankar made statement on foreign policy. Defence Minister Rajnath Singh made a statement on India-China border. Meanwhile, Health Minister Dr. Mansukh Mandavia also made a statement on the COVID situation in the country. Our endeavor in a difficult global situation is that the welfare of the Indian people is ensured, however challenging the circumstances. This may be in exceptional situations like Operation Ganga in Ukraine, or the ability to access key necessities like energy and fertilizers on affordable terms, or indeed in concluding migration and mobility partnerships as we have just done with Germany. Indian foreign policy is there to serve the Indian people. We will do whatever it takes to discharge that responsibility. It could be in ensuring international support for our policies or in the acceptance globally of our interests and objectives. These may be difficult times, but it is also an occasion to display our leadership and make a strong contribution to global peace, stability, growth and security. मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था,
हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। और आज हम तैयार है, आने वाले दिनों में आज एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है, ये हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है, लेकिन भी ये वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी, हम नहीं कहते कि हमने ही सब कुछ कर दिया, हम कहते हैं कि सब लोगों ने साथ में मिलकर किया है। और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। The productivity of Lok Sabha was approximately 97% and that of Rajya Sabha was approximately 103%. Honorable members, statistical evaluation sounds encouraging. 13 sittings, functional time 64 hours and 50 minutes against the total scheduled time of 63 hours and 26 minutes. Productivity 102%. "82 starred questions answered. Response to 1920 unstarred questions tabled. 9 bills passed returned after 20-hour discussion with 160 members' participation. The House traversed the Wildlife Protection Amendment Bill 2022, the Energy Conservation Amendment Bill 2022, 3 bills relating to the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Amendment, the New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill, the Maritime Anti-Piracy Amendments Bill, 31 private members' bills introduction was effected. 0 hour, there were 106 submissions, 205 special mentions. 36 reports were presented before the House by 8 department-related parliamentary standing committees. 3 hour short duration discussion on global warming and remedial steps, in which 17 honorable members participated. इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई, जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली है। सभा के चालू सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97% रही है। सत्र के आरंभ में सदन के एक नए माननीय सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 को सदस्यता की शपथ ली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों डिमांड फॉर एक्सचेंज पर 10 घंटे 53 मिनट तक चर्चा चली। वर्तमान सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए। Well, viewers, that's all we had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sansad TV. Goodbye for now from my side.